atomic physics, spectroscopy. Spectroscopy is the study of emission and absorption of radiation. Absorption of radiation by atoms and molecules. It also provide information about arrangement and motion of outer and inner electrons. Next is spectrum. A band of color is spectrum. A band of colors is spectrum. For example, in prism, white light is incident and we get a band of color. This is the spectrum. After dispersion we get bands of colors. This is the spectrum. Okay. Next is Bohr postulate या फिर Bohr theory. Bohr postulates. Neil Bohr developed a theory for hydrogen like atoms. Hydrogen like means having one electron in their outer shell as helium positive, lithium double positive. These are hydrogen like atoms. This theory based on certain postulates, जिसमें फर्स्ट है an electron in an atom moves in circular orbit, and there is a electrostatic force of attraction between positive ion and electron, as electron move in circular orbit around the nucleus. This is electron move in circular orbit around nucleus, and there is a electrostatic force of interactions between positive ions and electron. Second one is, देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस और एटम्स का जो साइज है, न्यूक्लियस का साइज एटम के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस भी है और इस स्पेस में इलेक्ट्रॉन है. इसने ये बोला कि हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, कुछ स्पेशल जगह पे अलाउ जगह पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा और कुछ जगह पे ही ऑर्बिट अलाउ है. जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं हर जगह नहीं मिलेंगे, कुछ अलाउ जगह पे मिलेंगे. और सेकंड पोस्टुलेट था only those orbits are possible for electron to revolve, for an electron to revolve, for which angular momentum is integral multiple of h cut. This is the condition of allowed orbital. Okay. Third one is
देखो अब इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है सर्कल में, इट मीन्स चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड इन मोशन। ठीक है, चार्ज पार्टिकल इज एक्सीलरेटेड इन द सेंस बिकॉज हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, किसी भी पॉइंट पे देखेंगे डायरेक्शन चेंज हो रही है, इट मीन्स एक्सेलरेटेड मोशन है। और सेमी क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा तो रेडिएशन एमिट करेगा, ईएम वेव एमिट करेगा, एमिट्स। बट उसने पोस्टुलेट में माना कि एक्सेलरेटेड मोशन होने के बाद भी ये नॉन रेडिएटिंग पाथ में मूव करेगा। सो द इलेक्ट्रॉन in spite of accelerated motion does not radiate electromagnetic energy, EM energy, while moving in allow orbit। ये एक्सेलरेटेड होने के बाद भी कोई रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, ये उसने अज्यूम किया, अजम्पशंस में माना, पोस्टुलेट में माना। एंड बोर फोर्थ पोस्टुलेट इज इलेक्ट्रॉन will either emit or gain या absorb energy when going from excited state to ground state and vice versa। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज द ग्राउंड स्टेट, इट एमिट्स रेडिएशंस। और जो एनर्जी होगी वो इन दो लेवल्स की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। एच न्यू इज, हम मान लेते हैं दिस इज द इनिशियल लेवल, क्योंकि एक्साइटेड है यहाँ से यहाँ आता है इनिशियल, एंड दिस इज द फाइनल एनर्जी। जो एच न्यू होगा एमिटेड रेडिएशन की जो एनर्जी होगी, दैट इज डिफरेंस ऑफ दीज टू एनर्जी। ओके, नेक्स्ट इज बोर मॉडल फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम। बोर मॉडल फॉर वन इलेक्ट्रॉन atom on the basis of these postulate he proposed a theory, a model that is for one electron atom. Let's consider electron. An electron is revolving around the nucleus Ze. This is the nucleus having charge plus Ze. Z is the atomic number and plus E is the charge on a proton, and electron is revolving around this nucleus. This is the electron and having charge minus E. Mass of the nucleus is taken infinitely high because in comparison of electron it may be considered as rest, and the electron is revolving around the nucleus. So applying condition for mechanical stability, on applying condition for mechanical stability, जितना कूलम्ब अट्रैक्शन होगा उतना ही सेंट्रिपेटल फोर्स होगा। कूलम्ब फोर्स है हमारा Z E²
4 pi epsilon naught. Let r be the radius of this circle, and r square is mv square by r. From here r is z e square 4 pi epsilon naught and mv square. From the second postulate, L is mvr is nh over 2 pi. From here we calculate v is nh over 2 pi. On putting the value of v is here, so r is z e square 4 pi epsilon naught m, v की जगह n square h square into 4 pi square. v is, from here v is nh over 2 pi mr, and n square h square 4 pi square m square and r square. After solving this, on solving 4 pi एक m से एक m and एक r से एक r, r is epsilon naught n square h square over pi m z e square. Let's say it is equation second. On putting the value of r is here, we get v is nh 2 pi m, r की जगह epsilon naught n square h square pi m z e square. After solving this we get v is z e square 2 nh epsilon naught, and let we have E total is the kinetic energy plus potential energy. From kinetic energy is half mv square, and potential energy is for this electrostatic force, that is z e square 4 pi minus 4 pi epsilon naught r. And on having value of velocities here, we get half m in place of v, z e square 2 nh epsilon naught whole square minus z e square 4 pi epsilon naught r is the potential energy, z e square 4 pi epsilon naught r. So this is, and we get, after solving this we get z e square 8 pi epsilon naught r is the kinetic energy, and potential energy is z e square 4 pi epsilon naught r. After solving both these, z e square 8 pi epsilon naught r is the total energy. So we having E total as minus z e square 8 pi epsilon naught r, and r is n square h square epsilon naught pi m z square. On having value of r is here, we get E as minus m z square 8 epsilon naught square h square and n square. So for the nth state, energy is En, let's say, and value of n is 1, 2, 3 and so on. For hydrogen
Z is 1, atomic number 1. So we get En is minus 13.6 n square, और सब कांस्टेंट है n के अलावा, and this is in electron volt, and having value of n is 1 2 3 for 1 E first is E1 is minus 13.6 electron volt. E2 is, on having value of n is 2, we get E2 is minus 3.39 electron volt. For E3 we get minus 1.51 electron volt, and E4 is 0.85 electron volt and negative also. And E infinity, for ongoing E infinity we get value of energy is 0. So we see that energies are all negative, and energy level diagram देखो, इन्फिनिटी पे एनर्जी जीरो होती है, एंड देन स्टार्टिंग से फॉर n इक्वल टू 1 लेवल के लिए, दिस इज फॉर n सेकेंड, n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और डिफरेंस ऑफ एनर्जी गोइंग डिक्रीजिंग एज वी go from 1 to 3rd 4th to this, and at infinity energy is 0. En for n 1 2 3 4 and so on infinity के लिए n is infinity. Okay, this is En is 0 for n infinity के लिए. 1 के लिए negative of 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड के लिए 3.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस ऑफ 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. डिफरेंस ऑफ एनर्जीज, देखो यहाँ से डिफरेंस ऑफ एनर्जीज, यहाँ का मैक्सिमम है, यहाँ मैक्सिमम, गोइंग डिक्रीजिंग एज वी गो फ्रॉम n1 to infinity. So this is the energy level diagram.